Hello dear students, Assalamu alaikum. I am Muhammad Ashraf and you're watching Ashraf Kakar channel. Dear students, we have discussed in our previous lecture about the environment, and the first component of the environment, that was the atmosphere. You know that atmosphere is one of the basic component of the environment that make possible life on earth, just because of its the atmospheric gases that prevents the ultraviolet radiations to hit the ground. It is the second layer of the atmosphere, the stratosphere. There lies the ozone layer, O3, with the chemical formula, which hinders and prevents to hit the ultraviolet radiations on Earth. So with this atmosphere, life has become possible on Earth. So in our today's lecture, we will be talking about the second component, that is the hydrosphere. The hydrosphere and the global water distribution, as well as we will look into the water cycle as well. So what the hydrosphere is? Hydrosphere can be defined as the total sum amount of water on planet Earth, that includes the surface water, the underground water and the air. देखें, जमीन के ऊपर जितनी भी पानी पाई जाती है उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर. अब जमीन के ऊपर, जमीन के नीचे या जमीन पर, ठीक है, तीन तरह से पानी मौजूद है. एक है सरफेस वाटर, ठीक है, जो जमीन के सतह के ऊपर पाया जाता है, और दैट कम्स द ओशियन, लेक्स और रिवर्स. जितनी भी ओशियन में मौजूद है पानी, रिवर्स में, सीज में एंड रिवर्स में, ठीक है, जो हमें नजर आती हैं वो पानी, दैट इज कॉल्ड द सरफेस वाटर. देन कम्स द अंडरग्राउंड वाटर, जो कि जमीन के सतह के नीचे रहते हैं, दैट इन द शेप ऑफ एक्वाफायर्स एंड वेल्स. ठीक है. देन कम्स द एयर, हवा में जो पानी मौजूद है, इन द शेप ऑफ वाटर वेपर्स, दैट इज कॉल्ड द क्लाउड्स और फॉग्स. ठीक है, जितने भी क्लाउड्स या फॉग्स जो जमीन के ऊपर एटमॉस्फेयर में रहते हैं, दैट वाटर इज कॉल्ड एज द एयर वाटर. देन कम्स द ग्लोबल वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. देखें, अल्लाह ताला ने, द गॉड इज क्रिएटेड अर्थ विद द 70% ऑफ वाटर एंड 30% ऑफ लैंड. ठीक है, अब जो 70% ऑफ वाटर ऑफ द लैंड है, ठीक है, उसमें से देखें जो 97% है, ठीक है, उस 70% जो वाटर पूरा है, उसमें जो उसका जो 97% वाटर प्रेजेंट इन ओशियंस, विच इज सैलिन, ठीक है, जो नमकीन है, विच इज नॉट एबल ऑफ ड्रिंकिंग, नॉट ड्रिंकेबल, जो कि पानी के जो पीने के काबिल नहीं है. सो द एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स, दे डू नॉट ड्रिंक दिस सैलिन वाटर. एंड यू नो दिस सैलिन वाटर concludes this 97% of the total amount of water. अच्छा, 3% of water रह जाता है, ठीक है, that is the drinkable water. 3% water जो है वो drinkable है. अच्छा, इस 3% of water drinkable में से भी जो 2% है, that is frozen in the shape of glaciers. वो fresh है 3% water, लेकिन 3 में से 2% जो है, that is frozen in the shape of the glaciers which are not available for drinking. अच्छा, 1% जो है वो अवेलेबल है पीने के लिए, और वो मौजूद है लेक्स, स्ट्रीम्स, स्वैम्प्स एंड मार्शेस. ठीक है, आपको पता है जब झीलों में, नदियों में स्वैम्प्स एंड मार्शेस, स्वैम्प्स वो जगह होते हैं, वो दलदल होते हैं जहां पर एनिमल्स, ठीक है, ग्रेजिंग की वजह से, एनिमल्स की चरने की वजह से जो वहां पर एक दलदल सा बन जाता है, जहां पर विच ऑलवेज रिमेन वेट, ठीक है, जो नम रहती है. व्हाइल मार्शेस, दे आर मोर फॉरेस्ट्री एज कंपेयर टू दी स्वैम्प एरियाज. तो ये वो दो एरियाज है जहां पर हमेशा इन स्टेगनेंट फॉर्म ऑफ वाटर दे रिमेन. देन कम्स द वाटर साइकिल. सो द वाटर साइकिल इज आल्सो कॉल्ड एज द हाइड्रोलॉजिक साइकिल. ठीक है, हाइड्रोलॉजिक साइकिल is composed or consists of 6 ways where the water cycle itself in the atmosphere. First is called the evaporation. Whenever there occurs decrease in atmospheric pressure, जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है और टेम्परेचर बढ़ जाता है, with the increase of temperature and decrease of atmospheric pressure, there occurs the evaporation, and पानी
और जो वाटर है इट चेंज इटसेल्फ फ्रॉम लिक्विड इनटू gaseous form and called as the water vapors. जब लिक्विड से वाटर अपनी अपनी हालत चेंज करता है इन द gaseous form, ठीक है, अपना स्टेट चेंज करता है, दैट इज कॉल्ड द evaporation. Then comes the transpiration. Water vapors evaporates from the leaves of the ear. We know that plant takes water from its roots, then it takes on towards the stem and reaches the leaves. जब भी लीव की तरफ पानी पहुंच जाता है, ठीक है, एंड विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर प्लांट अपने आप को स्टेबल करने के लिए द स्टोमेटा और द लीव्स ओपन इट्स होल्स एंड एग्जिट आउट द वाटर. सो वो भी हालत होती है विद द डिक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर देयर टेक्स प्लेस transpiration, and this transpiration occurs only in plants. Then comes the condensation. Condensation is the opposite process of evaporation, where the gaseous form of the water, where the gaseous state of water changes itself into liquid, and these water called as the water droplets. ठीक है, जब जमीन के सतह से या प्लांट से वाटर एवापोरेट हो जाता है या बुखारात की शक्ल में आसमान में एयर में, ठीक है, जब when it condense itself, when it collects itself, many water vapors collects in the form of droplets, then it falls back again towards the earth. अच्छा अच्छा, जो falling back towards the earth है, so this process is called as the precipitation. ठीक है, when water particles falls and reaches the ground in the shape of rain, snow, hail and sleet. ठीक है, चाहे वो बारिश हो, चाहे वो स्नो की शक्ल में हो, चाहे वो हेलिंग की शक्ल में हो, जो कि हेलिंग यूजुअली अकर्स इन समर सीजन वेयर देयर इज अ थंडर स्टॉर्म. ठीक है, जब हवाएं तेज चलती हैं और मौसम खराब होने की वजह से देयर अकर्स द फ्रोजिंग बॉल्स और द फ्रोजिंग आइस ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स कॉल्ड द हेलिंग, व्हाइल स्लीट ऑन द अदर हैंड, यू नो, जलाबारी जिसे कहते हैं, बट इन अ स्मॉल वे, एंड इट्स साइज, the size of sleet is of just 0.2 mm, while hail has the larger size which is of 0.25 mm. जो हेल का साइज है that is bigger than the steel. The fifth one, that is the surface run off and infiltration. देखिए जमीन के सतह के ऊपर जितने भी पानी मौजूद है एंड इट ऑलवेज रिमेन इन मोशन, आइदर इन दे आर इन रिवर्स और इन द ओशन. ठीक है, जो कि हमेशा स्ट्रीम्स में इन अ पोजीशन ऑफ मोशन, जो भी पानी सतह के ऊपर मोशन की हालत में मौजूद हो, दैट इज कॉल्ड सरफेस रन ऑफ. ठीक है, और इट ऑलवेज हेल्प्स इन द साइकिल ऑफ वाटर. देन कम्स द इन्फिल्ट्रेशन. इन्फिल्ट्रेशन वो होता है जब भी बारिशें होती हैं, जब भी स्नोफॉल होता है, रेन होता है, ठीक है, तो सम ऑफ द वाटर दे गोज इनसाइड, ठीक है, अंडरग्राउंड विद हेल्प ऑफ रॉक्स या थ्रू सॉइल. जब जमीन के अंदर मिट्टी से या रॉक्स के लेयर्स के थ्रू पानी जमीन के अंदर चला जाता है, और देन दे कम्स टुवर्ड्स द सरफेस अगेन इन द समर सीजन और इन द स्प्रिंग्स. ठीक है, सो दीज 6 steps helps in the motion of water cycle, and with this cycle water always remain in a constant position. So thank you so much for watching. See you in the next lecture.